Hi, my gingers and chilies. Welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today we are going to start one of the most important chapter called Chemical Thermodynamics and Energetics भी बोलते हैं इसको. Now, why it is important? First of all, here you are going to find variation of numericals. हर न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल से डिफरेंट है. सेकेंड थिंग, जेईई और नीट में हर साल दो क्वेश्चंस देखे गए, आइदर इन डायरेक्ट फॉर्म और इन इंटरकनेक्टेड विद सम अदर चैप्टर. और वैसे भी थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माय फेवरेट चैप्टर. सो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट. सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले वी ऑल हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. केमिकल मीन्स एवरीवन नोज, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन, right? So over here heat is going to be converted into some other form of energy, and at the same time some other form of energy is also going to be converted into heat. That means somewhere it is interrelationship. दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में आती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय, राइट? सो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की आपकी मेनली एप्लीकेशंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, राइट? एज आई हैव टोल्ड यू मीनिंग ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स. अब जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो मेनली इट टेल्स अबाउट व्हाट? इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी, एंड सेकेंड थिंग इट टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, और आई कैन कॉल इट प्रोसेस. So, applications that are feasibility. Thermodynamics ये बताता है कि whether this machine is going to be feasible or not feasible. Thermodynamics के चार लॉज हैं. zeroth law, ZEROTH, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. So total चार लॉज हैं. If the machine is obeying all the four laws of thermodynamics, that means that machine is feasible. Is it clear? राइट ब्रदर्स ने ट्राई किया था उड़ने का. कहीं ना कहीं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल नहीं हुए थे, और नहीं हुए ऑफ कोर्स. दैट्स व्हाई ही केम आउट विद द आइडिया ऑफ व्हाट? ही केम आउट विद द आइडिया ऑफ एरोप्लेन. देन अराउंड 10 to 15 years back someone has thought of amphibian car, जो रोड पे भी चले, पानी में भी चले. Some of you would have seen in a movie called Tarzan, but it's true thing which is there in America already. The bus is there which moves on the road and then it takes you inside the sea in the place called San Diego, and mainly carried out by Splash Tours and Travels. जिसको देखना है YouTube पे देख सकते हो. And that जिसने सोचा होगा तब लोग हंस रहे होंगे, बट इट वुड हैव ओबेड ऑल द फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऑफ कोर्स बाकी कंडीशंस भी होती हैं, बट इट हेल्प्स इन द फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी के बाद सेकेंड पार्ट आता है एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन. एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूंगा तो वारंटी या गारंटी. आप कोई चीज बाय करते हो तो आपको 1 साल 2 साल 5 साल की वारंटी या गारंटी मिलती है. So extent to which the machine is going to work, and that plays a very important role. कोई आपको बोलेगा कि ये इतनी महंगी है, 1 लाख की चीज है, लेकिन आपको मैं 5 साल की वारंटी दे रहा हूं, then you get the confidence. So extent of the process is given by thermodynamics. अब आपको क्वेश्चन आता है what is thermodynamics. तो जब भी मैं TD लिखूंगा याद रखो, बार बार नहीं लिखेंगे. TD means thermodynamics. तो ध्यान से सुनो. Thermodynamics is defined as a branch of physical chemistry. It is a branch of which chemistry? Physical chemistry, which deals with energy changes accompanied by physical and chemical process, या reactions भी बोलते हैं. Process is going from one state to another state. So thermodynamics is defined as the branch of physical chemistry which deals with energy changes accompanied by physical and chemical process. अपने पोर्शन में खाली केमिकल है,
फिजिक्स में आप फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे. सो अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बोली तो फिजिकल मत लिखना. इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस अकम्पनीड बाय केमिकल प्रोसेस. खत्म हो गया. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट थर्मोडायनेमिक्स. अब थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई? Thermodynamics की limitations है that thermodynamics only deals with macroscopic properties. इसका मतलब सेकेंड पॉइंट फ्री हो गया. It does not deal with which properties? Microscopic properties के साथ डील नहीं करती है. It only depends upon initial and final state of the system. System क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा. So it depends upon initial and final state of the system. मतलब it is independent of mechanism. सब पॉइंट समझाऊंगा. पहले लिख रहा हूं बेसिक्स. And it does not tell about rate of reaction. Does not. काट रहा हूं मतलब does not. So very important question. What do you mean by chemical thermodynamics? What are its limitations? Total 5 है. कोई भी 4 याद रखो. First point, thermodynamics only deal with macroscopic properties. What properties? Macroscopic. Properties which you can observe it, properties which are present in large amount, magnitude must be large, and properties which you are going to measure it. याद रखो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड ऐसी प्रॉपर्टी जो बल्क में है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. आपके पोर्शन में 3 याद रखनी है: प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. All 3 of them you can measure it, yes. All 3 of them you can observe, yes. Everyone has observed. Pressure भी observe कर सकते हो, volume भी observe कर सकते हो और temperature भी observe कर सकते हो. And all 3 of them are present in bulk, yes. In this chapter we are not going to deal with microscopic properties. The properties proton, electron, neutron, thermo को कोई interest नहीं है उसमें. It will only deal with macroscopic properties. Thermodynamics only depends upon initial and final state of the system. इसको बोलते हैं state function. तो वापस नहीं बताऊंगा. What is that known as? State function. State function is defined as the function which only depends upon initial and final state of the system. What does it mean? इसका मतलब है अगर अभी टेम्परेचर है T1 और बाद में 2 घंटे के बाद टेम्परेचर हुआ T2, बीच में क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं. So thermodynamics only depends upon initial and final state of the system. So for example, we all have to go from ground floor to the 25th floor terrace. Is it clear? हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर से 25th फ्लोर के टेरेस पे आना है. Someone will walk, स्टेप्स चढ़ जाएगा, लिफ्ट मैक्सिमम, कोई पाइप से चढ़ के आएगा. इफ यू आर बोर्न इन केरला मे बी, राइट. कोई रोप से आ सकते हैं, कोई सीढ़ी लगाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से आ सकता है. These are different ways I am telling you, right? थर्मोडायनेमिक्स को कोई फर्क नहीं करता है. सबने स्टार्ट एक पॉइंट से किया, एंड एक पॉइंट से किया. दैट इज व्हाट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बीच में क्या हुआ हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है. दैट मीन्स चौथा पॉइंट इसका उल्टा है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैकेनिज्म. व्हाट इज मैकेनिज्म? पाथवे. मुझे कुछ लेना देनी है लिफ्ट से आए कहां से आए, मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट में ही इंटरेस्ट है. So independent of mechanism. And it does not tell about the speed of the reaction or rate of reaction, कि whether the reaction is slow, moderate or fast. मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपको कौन बताने वाला है? ये दोनों पॉइंट्स आपको बताएगा केमिकल काइनेटिक्स. जब भी पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स इन मेनली डीलिंग विद दिस 2 points. So these are limitations of thermodynamics. So please copy it down. इनिशियल आज खाली इंट्रोडक्शन ही लेंगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स का, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर एक बार ये समझ में आ गया
So second part is going to be very, very easy. So please copy down fast. Now we move to what do you mean by system? Now any part of the universe where you study thermodynamic reactions, that part is known as system. Everything in the vicinity of the system is called surrounding. तो इसको हम लोग यूनिवर्स पकड़ रहे हैं. So universe is equal to क्या हो गया? Universe is equal to हो गया system plus surrounding. So this is your universe. Universe is equal to system plus surroundings. And please remember, system and surroundings are separated by bond. So system is a part of the universe where we study thermodynamic reactions. Surrounding is mainly the part of the universe which we are only going to consider anything other than system is called surrounding. लेकिन surrounding इसका मतलब ये नहीं है कि दूर दूर तक जाओगे. अगर मैं इस रूम में हूँ तो surrounding खाली इसके आजू बाजू के एरिया को ही हम लोग मानेंगे. ठीक है? So that is called surroundings. तो एक कार है जो आपको स्विट्जरलैंड के लिए बनानी है. So you have to see the surroundings or the conditions of Switzerland, not of all over the world. Right? So that is a system. Car is a system, and surroundings everyone got it. What is the temperature over there, what is the pressure over there, what is the moisture content, and whatever different conditions are there which one has to take care while making or manufacturing a car. उसके बाद आते हो boundary. Boundary is defined as the real or imaginary line which separates the system from the surroundings. तो कभी कभी आपको boundaries नजर आती है. yes, फॉर एग्जाम्पल ये रूम की बाउंड्री हमको विजिबल है भाई. क्या पे ये सब दीवारें बाउंड्री है, राइट? बट जब आप चाय पीते हो देयर इज नो रियल बाउंड्री, बट यू नो फ्रॉम वेयर टू टेक अ सिप. दैट इज कॉल्ड अगेन अ बाउंड्री, बट इट इज इमेजिनरी बाउंड्री. बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग और बाउंड्री कैन बी इंसुलेटर. अगर आपने चाय या कॉफी कप में रखी है, राइट, देन chances are always going to be there some amount of heat is, अगर even उसको ढक के भी रखा है, some amount of heat may be transferred through the boundary. लेकिन अगर insulated vessel में है, then it is going to remain hot or warm for a long period of time. So that is what we call it boundary. And on the basis of boundary, systems are divided into three parts: open, closed, and isolated. So on the basis of boundary, systems are being classified into three types: open system, closed system, isolated system. Open system क्या होता है? ध्यान से सुनना, यहाँ कोड वर्ड याद रखो मी, और ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ. A system is said to be an open system when matter as well as energy is exchanged between the system and the surroundings. तो आपने एक गर्मा गर्म चाय ली कप के अंदर, ठीक है, ये ओपन सिस्टम. आपने गर्मा गर्म चाय ली. एवरीवन नोज मैटर इज कमिंग आउट फ्रॉम इट, यस, in the form of vapors, and heat energy is also being lost to the surrounding. Both of them are exchanged, और थोड़ी देर के बाद आपकी चाय ठंडी हो जाती है. So a system is said to be an open when matter as well as energy is exchanged between the system and the surroundings. I hope सबको समझ में आ गया. अब आपने फटाफट वापस गर्मा गर्म चाय बनाई, बट इस बार आपने उसको ढक दिया, क्लोज डाउन विद द लिड. सो सिस्टम इन विच ओनली energy is exchanged between the system and the surroundings, then it is called closed system. क्लोज कर दिया, मैटर अब बाहर नहीं जा रहा. और अब इसी गर्मा गर्म चाय को आपने थर्मस में ट्रांसफर कर दिया, then neither matter nor energy is exchanged between the system and the surroundings. एक में चाय किसमें है? ओपन मग में. एक में कवर्ड विद द लिड. तीसरे में आपके थर्मस फ्लास्क में. एंड एवरीवन आई होप understood what do you mean by open system, closed system and isolated system. Human beings are open system. All living organisms are open system, क्योंकि हम लोग मैटर लेते भी हैं, फेंकते भी हैं, हम लोग एनर्जी लेते भी हैं, देते भी हैं. So we are an open system. याद रखना. And systems are also being divided on the basis of homogeneity and heterogeneity.
So homogeneous system होता है where all the phases appear like a one phase, then it is called homogeneous, like water and alcohol. Solutions and colligative properties में homogeneous होता है वो. And water and oil अगर mix कर दिया then it is going to be called a heterogeneous system. But यहाँ पे हम लोग open और closed के बारे में ज़्यादा बात करेंगे. So I hope the second introductory point is clear to everyone. What do you mean by system? A part of the universe in which we study thermodynamic reactions is called system. The whole universe excluding system is called surrounding. The real or imaginary line which separates the system from the surrounding is called boundary. And on the basis of boundary there are three types of system: open, closed and isolated. यहाँ trick है me का full form है matter and energy, और कुछ words याद रखने हैं: exchanged, system, surroundings. So I hope this part is clear to everyone. Notes में आपको सब definitions मिलेगी अच्छी तरह से, but still whoever want to add whatever trick, please add it. Now let's go to thermodynamic properties. There are two thermodynamic properties. One is called intensive property and another is called extensive property. Now, what is the meaning of this two? Intensive, I for intensive, I for independent. Very easy to remember. It is independent of quantity of matter present in the system. So, intensive property is the property which is independent, I for intensive, I for independent, of quantity of matter present in the system. इसका मतलब extensive property is the property which depends upon the quantity of matter present in the system. तो वो लिखूंगा नहीं, इसका उल्टा है. अब समझते हैं इसको. Now we all know कि there are many different types of physical quantities. अब कौन सी intensive है, कौन सी extensive है देखते हैं. Now when we are talking about area, volume, any type of energy, they all are extensive properties. Why? Area depends upon the quantity. Volume, yes. कोई भी एनर्जी आएगी तो आप सबको मालूम है एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी. यस, हीट एनर्जी आए, कोई भी एनर्जी आए, इंटरनल एनर्जी आए. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? आई विल टेल यू. So any type of energy comes, that all goes under extensive. अब आते हैं यहाँ पे डेंसिटी. पांच छह एग्जांपल्स देता हूँ. Now we all know density. Density of ice is 0.9 grams per cc. मतलब जो आइस आप अपने कोल्ड ड्रिंक में डालते हो या पानी में डालते हो उसकी डेंसिटी भी 0.9 है, और जिसने टाइटैनिक को डुबाया था उसका भी 0.9 है. Does not matter quantities, right? But everyone has to know density is equal to what? Mass upon volume. So mass and volume, both of them are extensive properties. ट्रिक बाद में दूंगा कैसे याद रखना. उसके बाद आते हैं प्रेशर पे. Pressure is also intensive property. Yes, it does not matter whether you are fat or you are thin or you are refill like, does not matter. The pressure exerted by the atmosphere on your body is going to be 1 atmosphere only. So pressure is which property? Intensive property, right? But pressure is equal to thrust upon area or force upon area. Area तो मैंने बताया. Force is also or thrust is also which property? Extensive property, right? उसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे. आप 5 लीटर का थम्स अप बाय करो, 2 लीटर का थम्स अप बाय करो, 1 लीटर का थम्स अप बाय करो, 500 ml का बाय करो, 100 ml का बाय करो, टेस्ट तो सेम आता है. कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर. बट कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम एक्सटेंसिव, सो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गया, right? Then you come to refractive index. Important question. Refractive index does not depend upon the quantity of matter. नहीं, it is going to be same. छोटे ग्लास से पास हो या बड़े ग्लास से पास हो, नदी में से निकले या फिर छोटे से लेक में,
It does not matter. Refractive index is again independent of quantity of matter. So this is what you have to know. What are these two properties with respect to thermodynamics? One is independent of the quantity of matter. कोई फर्क नहीं करता quantity कितना भी हो. Melting point सोचो, boiling point सोचो, freezing point सोचो. Does not matter. All types of temperature when we are talking about their intensive properties independent of quantity of matter. कम पानी बॉईल करोगे, ज़्यादा बॉईल करो, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. So when we are talking about intensive and extensive, very important question with respect to entrance. But बहुत easy है, थोड़ा सा भी समझोगे तो आराम से सॉल्व कर पाओगे. अब मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है. Just remember intensive property. So the ratio of two extensive property is always an intensive property. याद रखना. ये रूल नंबर 1 दिमाग में फिट कर लो. Heat capacity is extensive property. Heat capacity. But specific heat capacity is intensive property because specific में amount specific किया हुआ है. Heat capacity is extensive property. Molar heat capacity is intensive property. 1 mole of a substance is being defined over there. So heat capacity extensive, molar heat and specific heat capacity is intensive. Volume is extensive, volume per mole or volume per gram is intensive. So भूलना मत ये छोटा सा concept. तो ये आपका हो गया very important part with respect to theory and entrance called intensive and extensive properties. Copy कर लो. Now we come to what do you mean by state function and path function. State function is the function, अभी बताई थी definition, which depends upon initial and final state of the system. मतलब इसको रास्ते से कोई फर्क नहीं गिरता है. And path function क्या होगा? Path function is a function which depends upon the mechanism of the system. Pathway पे depend करता है. तो यहाँ पे याद रखो आपके दो एग्जाम्पल्स, एक को बोलते हैं वर्क डन और दूसरा हीट. बट स्टेट फंक्शंस में आपको याद रखना है डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी. दिस 7 स्टेट फंक्शंस आर देयर इन योर पोर्शन और सातों के सातों अच्छी तरह से आना चाहिए. पहले को बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, change in volume, change in temperature, change in enthalpy, 11th में पढ़ा हुआ है, right? Change in enthalpy, that is endo और exo के लिए पढ़ाया था. Change in internal energy, U is change in internal energy, old name is delta E, no more used, delta U. Change in internal energy. Change in entropy, new word for you. Change in entropy, change in Gibbs free energy. They all only depend upon the initial and final state of the system. So delta P is equal to P2 minus P1. Delta H is equal to H2 minus H1. So I hope this part is clear to everyone. So that is called state function. Now we go for thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium, what is equilibrium? Where the RF rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. बराबर है. अब thermodynamic equilibrium कब होता है? जब pressure, temperature and we can say the chemical composition. Now when all these three parameters are going to be in equilibrium, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. When the pressure of the system remains constant throughout the process from one state to another state, temperature is going to remain constant throughout the process, and when the chemical composition is going to be constant throughout the process, then we can call it that the system is at thermodynamic equilibrium. ये important है क्योंकि everything in industries are being standardized, right? They have to make a prototype, they have to standardize the things and they have to send it to millions of people. तो कैडबरी का टेस्ट चेंज नहीं होने वाला, कुरकुरे का टेस्ट चेंज नहीं होने वाला because they have to create the conditions, and due to that you are going to find that thermodynamics plays a very very important role in another property called thermodynamic equilibrium, जहाँ पे pressure maintain करते हैं, temperature maintain करते हैं और chemical composition maintain करते हैं, right? So that is another introductory point everyone has to know. Then you have to know state variables. जो ज़्यादा पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, but basics मालूम होना चाहिए. State variables are only 3: pressure, volume, temperature, which I have explained you in the form of state and path function. These are 3 state variables
which have a property that they are going to only depend upon the initial and final state of the system. Does not matter आपका pathway क्या है. A to आपको B पहुंचना है तो आप ऐसे घूम के जाओ, सीधा घूम के जाओ, घूम घाम के जाओ, does not matter. These are called state variables. Path variables are those two, but state variables just आपको definition याद रखनी है, कोई पूछता नहीं. So that is another important term with respect to thermodynamics. अब next जाते हैं. Let's go to the next introduction called internal energy. आप flow sheet देख सकते हो बोर्ड पे. Internal energy is denoted by U. अभी बताया था आपको state functions में delta U. So what is internal energy? Internal energy is the sum of potential energy, kinetic energy, nuclear energy and electronic energy. So internal energy is the total energy of the system, total energy of the system excluding PV type of energy. लिख लेना definition. Internal energy is defined as the total energy of the system excluding PV type of energy. What is PV? Pressure and volume type of energy को include नहीं करते हैं. What is pressure and volume type of energy? थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. With the help of piston. So अभी खाली लिख लो. Internal energy is defined as the total energy of the system excluding PV type of energy. Internal energy is the sum of U is equal to U potential energy, kinetic energy, the nuclear energy and electronic energy. But these two are not being considered in thermodynamics. As I have told you in limitation, thermodynamics does not deal with microscopic properties. So we'll only talk about this two. Potential energy is further divided into intermolecular and intramolecular. Intra, same, inter, different. So intermolecular and intramolecular, that are the two types. That is the energy possessed by the gaseous molecules or the liquid molecules by virtue of its position. And kinetic energy is of three types, where the fluids are having a property to undergo translational motion, vibrational motion and rotational motion, जो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, खाली नाम याद रखने. And that is about the internal energy का पहला part. Third thing everyone has to know the formula. Delta U is equal to Q plus W. इसको बोलते हैं first law of thermodynamics का formula. What is delta U? Change in internal energy. Which is Q? Q is heat, जो absorbed भी हो सकती है और released भी हो सकती है. First law of thermodynamics में depth में बताऊंगा. What is W? Work done. Okay? And this is the formula जो आपको याद रखना है, derive आपके portion में है नहीं. And internal energy is the direct function of temperature. याद रखना. Internal energy is the direct function of temperature. अगर temperature बढ़ेगा तो internal energy बढ़ेगी. Temperature कम होएगा, internal energy भी कम होएगी. अगर temperature change is zero, delta T is zero, तो delta U is also zero. So that is the direct function of temperature. It is a state function. Delta U depends upon what? Delta U depends upon initial and final state of the system. U2 is final, U1 is initial. So that is about internal energy, जो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए. What do you mean by internal energy? Internal energy का formula क्या है change का delta U का? What is it in the form of different types of energy? State function है ये. Is it clear? And once you understand that, that is going to help you a lot in second lecture. क्योंकि ये सब basics है. Basics एक बार आ गया तो thermodynamics is very very easy. But initial सब part आपको याद रखना है. Okay? Let's go to the next. Now let's go to first law of thermodynamics. Zeroth law is not in your portion, लेकिन बाद में बताऊंगा. After finishing all the three laws, first law, second law and third law is there in your portion. First law of thermodynamics is same as law of conservation of energy. सुना हुआ है ना सबने? तो मैं आपको statements बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं. पहला, energy can neither be created nor be destroyed. It is always being transformed from one form of energy to another form of energy. सबने सुना होगा. The total amount of energy in an universe always remains constant. लिख लेना. The total amount of energy in an universe always remains constant. The total amount of energy in an isolated system, universe को हटा देना. A third point, in an isolated system always remains constant. When one form of energy disappears,
then an equivalent amount of energy reappears. When one form of energy disappears, another form of energy reappears. Of course, equivalent amount. That is what first law of thermodynamics. बराबर है? And finally, it is impossible to prepare a perpetual machine. 5वां पॉइंट का पॉइंट लिख रहा हूं खाली, तो बाकी पॉइंट्स आपने 9-10 में पढ़े हुए. It is impossible to prepare the machine which can convert 100% the energy into work. Possible ही नहीं. That is called an ideal machine where the efficiency is 100%. Possible नहीं. So it is impossible to prepare a perpetual machine, a machine which can do 100% work from its energy और vice versa नहीं हो सकता है. तो याद रखो, आइडियल मशीन नहीं हो सकती है. दैट इज द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ इट. एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आए जो हर जगह पे मॉडिफिकेशन लाते हैं. सो थर्ड वाला पॉइंट क्या बोला था? सोचो सोचो सोचो. थर्ड वाला पॉइंट बोला था द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो उन्होंने एक और पॉइंट ऐड किया फ्रॉम इट्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. द टोटल अमाउंट ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी in an isolated system remains constant, and that is called modified first law of thermodynamics. Third point को थोड़ा सा modify कर दिया. Okay, and that is what you have to know about first law of thermodynamics. किसी ने भी आपको first law of thermodynamics बोला तो आपको 5 पॉइंट्स दिए, कोई भी 4 पॉइंट्स याद रखो. 10th क्लास के जो 4 पॉइंट्स हैं वो भी चलेंगे. That is, energy can neither be created nor be destroyed. It is always being transferred from one form of energy to another form of energy. The total amount of energy in a universe always remains constant. The total amount of energy in an isolated system always remains constant. When one form of energy disappears, an equivalent amount of another energy reappear, and it is impossible to prepare a perpetual machine. So I hope सब points clear हो गए. ठीक है? और first law of thermodynamics से आपको मिला delta U is equal to Q plus W is the formula of first law of thermodynamics. तो ये आपकी एक vessel है, and this vessel is having this piston, और अंदर समझिए गैस molecules हैं. ठीक है? Now everyone knows if I am going to heat it, then these molecules are going to have a property to exert pressure on this piston, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स, या क्या बोलेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. बाहर वाले फोर्स को क्या बोलेंगे भाई? ऑपोजिंग फोर्स बोलेंगे. और ये कौन सा है आपका प्रेशर? ये ऑफ कोर्स आपका एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है? तो जब आप हीट करते हो तो अगर आपकी इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी तो बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? U2 में. हीट एब्जॉर्ब हो रही है, and due to that the piston will go in upward direction, so some amount of work is done, and that is what we call it first law of thermodynamics. अब delta U मतलब change in internal energy, Q is heat and W is mainly the work done. Delta U mainly अगर U2 is greater than U1 तो delta U is positive else negative. but ज्यादातर आपको Q और W के बारे में मालूम करना है. Q is पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो. पॉजिटिव कब होता है? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे यहां पे कर रहा है, दैट टाइम Q इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. और ऑफ कोर्स व्हेन इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, उल्टा बोलने का है, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम. पूरा नहीं लिखूंगा, बराबर है? तो जब भी हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, दैट टाइम द Q is considered for the sign convention positive value and minus when it is going to be heat evolved. जब न्यूमेरिकल करोगे तो समझ में आएगा. तो वर्क डन देखते हैं. वर्क डन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव कब होता है? when work done is due to compression. और नेगेटिव कब होता है? when work done is due to expansion. किसका कॉम्प्रेशन और किसका एक्सपेंशन? भाई पिस्टन का. पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है तो सडनली वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया ना. पिस्टन ऊपर गया, एक्सपेंशन हो गया.
एनीथिंग गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ इज, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड एनीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ गोइंग टू बी पॉजिटिव. वेरी इजी. तो पिस्टन अगर नीचे की तरफ आ रहा है, सबने देखा हुआ है पिस्टन, पिचकारी का पिस्टन भी चलेगा, बाइक में भी सबने पिस्टन देखा हुआ है. ओके, सो इफ द पिस्टन इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्क डन इज बीइंग कंसीडर्ड पॉजिटिव, दैट इज वर्क इज डन ड्यू टू कंप्रेशन. और अगर नेगेटिव आया, दैट मींस वर्क इज डन ड्यू टू एक्सपेंशन. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. पहला फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं, याद रखो. और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग न्यूमेरिकल्स. So that's all for today. Introductory lecture of thermodynamics is now over. See you in my next lecture where we are going to talk about process and very important topic. ध्यान से पढ़ना, जो भी पढ़ाता जा रहा हूँ अपना टाइम लो, देखो, और जहाँ पे भी डाउट्स है प्लीज आस्क मी. See you in my next lecture.